इतने तो उदो ब्रेक होए सानू की फायदा। मैं कह रहा था उससे पहले मैं $100-150 साइड पे कर लेता उससे पहले। अच्छा सर, एक और मजेदार चीज है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर भी जो आपकी कैंडल्स की पैटर्न बन रही होती है ना, जिस तरह से उनके बोले हुए के ऊपर भी मार्केट उसी तरह से वर्क करती है। चलें जी, देख लेते हैं आज उस तरह वर्क करती है या नहीं। अच्छा जी, आपको $100 चाहिए फ्री में, तो भाई जाके वो हिस्सा ले लो पूल में। हमारी तो वो बनी हुई है, ऑलरेडी टिकट सेल हो रहे हैं। सर वो क्या क्या सीन है वो $100 फ्री वाला, मुझे भी थोड़ा सा बता दें। $100 वाला ये सीन है कि जो लोग ऐसे लोग जो हम देख रहे हैं जिनके पास कैपिटल नहीं है, हम कैपिटल दे रहे हैं $100 का, वो $100 विड्रॉ करेंगे, लैपटॉप ले लें या मोबाइल ले लें, वट एवर दे वांट। हमने बेसिकली एक छोटी सी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की है, वो अगर कोई देख ले तो उसको समझ आ जाएगी ये $100 की गेम क्या है। ये वीडियो है, ये एक समझने कि एक हमने ना फ्री में एक ना लोगों को चांस दिया है $100 विन करने का, अर्न करने का। ठीक है। तो ये वीडियो है जी, ये हमारे चैनल पे अभी आई है, ये $100 गिव अवे। तो इस वीडियो को वॉच करना जी, मैं इसकी वीडियो का लिंक भी लगा देता हूँ। इस वीडियो को वॉच करके आपने अपना ये देखिए जी $100 फ्री गिव अवे लें जी। इस वाली वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। इसमें मैंने टर्म एंड कंडीशन रूल्स बताए हुए हैं। तो जो सब्सक्राइबर इसमें हिस्सा लेना चाहता है, सब्सक्राइबर के लिए है सिर्फ, तो वो $100 विन कर सकता है। और NFP वाले दिन, NFP की न्यूज़ के 5 मिनट पहले हम ये रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, यानी कि लकी ड्रॉ करेंगे लाइव सबके सामने। शकीर साहब, आपने ना मार्केट को कैद कर लिया है। वो ना चिल्ला काटने से पहले ना वो इर्द गिर्द ना वो लाइन लगाते हैं कि इस लाइन से बाहर नहीं जाना। तो आपने ये जो लाइनें लगा ली है ना, मार्केट से बाहर नहीं जा रही है। अब वो बायर वाले भी फंसे हुए हैं, सेलर वाले भी फंसे हुए हैं। अच्छा, इधर से ना एक बाय बन सकती है शकील साहब, ये यहाँ से बाय करेंगे तो एसएल बहुत छोटा होगा। हाँ, ऐसा छोटा होगा। 2400 बाय करके एक रिस्क ले लो, 2400 बाय और 2422 या 550 20 से स्टॉप लॉस लगेगा $2-1 का, और फिर उसके बाद 2424 का आप टीपी दे दो। गिव अस 50 to 70 पिप डेली। अच्छा जी, कुरैशी साहब ठीक है जी। खुरम शाह सर, आप अपनी कैंडल को अरेस्ट, हाँ कैंडल को अरेस्ट कर दिया शकील साहब, आपने कैंडल्स को अरेस्ट कर दिया। अरे वाह 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 यार, ये ब्रेकआउट नहीं ना होता तब तक आप सेल की ट्रेड नहीं कर सकते। इवन आई एम सेलर, अगर ये ब्रेकआउट हो गए कन्फर्म हो तो। बाबा जी अभी आए नहीं हैं, किंग योगी बाबा जी आ जाते हैं तो फिर बाबा जी को हम सुनेंगे लाइव। तैयारियां कर लूँ? लो जी, तैयारियां कर लेते हैं, हम चैनल को लाइव कर लेते हैं बाबा जी के। बाबा जी ने कितने जाना, इतने रहने ने बाबा जी साढ़े नाल। लो जी, FOMC कितने हो बाबा जी? फेडरल रिजर्व का चैनल है ये, और अभी ये लें जी, ये लें जी बाबा जी, अब आपको लाइव यहाँ पे आ जाएंगे नज़र। जी जी, लकी ड्रॉ है, क्योंकि $100 आपने रैंडम तो नहीं। शकीर साहब देखा, ये अगर किसी ने भी इधर से बाय किया होता, जो मैंने एरिया बताया था, तो वो देखिए उसका वो टेक प्रॉफिट तो हिट हो गया होता अब तक। छोटी सी ट्रेड थी, अच्छी ट्रेड थी। वाह 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 वाह, गई जे मार्केट ऊपर। लो जी, 2424 का टीपी हिट हो गया आपका, अगर आपने बाय किया था तो। सर 2425 या 567 अब ये क्रॉस करे, ये नेक्स्ट कैंडल में ग्रीन कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, और लास्ट कम से कम ये वीक्स वाला एरिया क्रॉस करके कैंडल क्लोज हो ना, तो फिर ये कन्फर्मेशन कैंडल होगी ये नेक्स्ट कैंडल। और उसके बाद ये दोबारा इसको रीटेस्ट करेगा, 1 2 3 कैंडल के बाद इसी एरिया को रीटेस्ट करेगा समथिंग के 2423 या 048, जो कि सिंगल कैंडल स्टिक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा बाद में हमारे पास, फिर उसको मार्केट टैब के ऊपर बाय किया जा सकता है। सही है सही है सही है सही है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे लगता है बाय के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिवाय इसके कि 2421 को मार्केट ने 3 दफ़ा टैप किया, 4 दफ़ा टैप किया, वो ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये अपसाइड पे ही मोस्ट प्रॉबरली मूव करेगी।
55 सेकंड रह गए हैं जी मेरी कैंडल क्लोज होने में M15 की, और ये कैंडल क्लोज होगी कहीं जाके अगले 45 मिनट में 2426 पे, तो फिर तो बाय ही बाय है शकील साहब, फिर तो बाय ही बाय है, फिर आप सेल नहीं कर सकते गोल्ड को, यूँ फील हो रहा है। लेकिन 32 सेकंड है, 32 सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। अच्छा जी, हमारे व्यूवर्स को देखें क्या कर रहे हैं जी, एक नज़र इंडेक्स को भी देख लें ज़रा। अच्छा जी बिलाल भाई, इंडेक्स तो मेरे पास हर टाइम खुला होता है और इंडेक्स में भी सेम रिवर्स ही बन रही है, तो इसलिए मैं गोल्ड को बाय साइड पे प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा उसने टैप किया है, 2421 को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसलिए मेरा जो, लो जी आ गया बाबा। बाबा जब भी कहेगा ना गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्केट गोल्ड अप साइड पे भागेगा, मुझे लग रहा है गोल्ड गया। सर धड़ाम गिर भी सकता है। हाँ गिर भी सकता है। लो जी बाबा जी आ गए, तमाशे के लिए तैयार हो? अरे वाह, काशिफ अब्बास भाई जो ने पिज़्ज़ा खाने गए My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy has made considerable progress toward both goals over the past 2 years. The labor market has come into better balance, and the unemployment rate remains low. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.5%. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary pressures. We are attentive to risks on both sides of our dual mandate, and I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. GDP growth moderated to 2.1% in the first half of the year, down from 3.1% last year. Private domestic final purchases, or PDFP, which excludes inventory investment, government spending, and net exports, and usually sends a clearer signal of underlying demand, grew at a 2.6% pace over that same period, the first half. Growth of consumer spending has slowed from last year's robust pace, but remains solid. Investment in equipment and intangibles has picked up from its anemic pace last year. In the राहील housing भाई sector, इस पे भी investment इसको ऑन कर stalled in दें the second quarter after Zoom a पे। strong rise in the first. ओके। Improving supply conditions have supported resilient demand and the strong performance of the U.S. economy over the past year. In the labor market, supply and demand conditions have come into better balance. Payroll job gains averaged 177,000 jobs per month in the second quarter, a solid pace, but below that seen in the first quarter. The unemployment rate has moved up, but remains low at 4.1%. Strong job creation over the past couple of years has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years, and a strong pace of immigration. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs to workers gap has narrowed. Overall, a broad set of indicators suggest that conditions in the labor market have returned to about where they stood on the eve of the pandemic, strong but not overheated. Inflation has eased notably over the past 2 years, but remains somewhat above our longer-run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in June. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.6%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households and businesses and forecasters, as well as measures from financial markets. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people.
In support of these goals, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue reducing our securities holdings. As the labor market has cooled and inflation has declined, the risks to achieving our employment and inflation goals continue to move into better balance. Indeed, we're attentive to the risks to both sides of our dual mandate. We have stated that we do not expect it will be appropriate to reduce the target range for the federal funds rate until we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. The second quarter's inflation readings have added to our confidence, and more good data would further strengthen that confidence. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. As the economy evolves, monetary policy will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals. If the economy remains solid and inflation persists, we can maintain the current target range for the federal funds rate as long as appropriate. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we are prepared to respond. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to achieving maximum employment and stable prices over the longer run. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Gina. Gina Smilik from the New York Times. Thanks for taking our questions. Markets pretty much entirely expect a rate cut in September at this stage. I wonder if you think that's a reasonable expectation, and if so, why not just make the move today? Thank you. So on September, let me say this. We have made no decisions about future meetings, and that includes the September meeting. The broad sense of the committee is that the economy is moving closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate. In that, we will be data dependent, but not data point dependent. So it will not be a question of responding specifically to one or two data releases. The question will be whether the totality of the data, the evolving outlook, and the balance of risks are consistent with rising confidence on inflation and maintaining a solid labor market. If that test is met, a reduction in our policy rate could be on the table as soon as the next meeting in September. So you asked why not today, and I would just say, again, that the broad sense of the committee is that we're getting closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate, but that we're not quite at that point yet. Howard. मार्केट ने ब्रेक कर ली है, ब्रेकआउट ही होगा, ऊपर ही Just जाएगा. to follow up on that a bit, if inflation behaves as you expect between now and September, would you regard a cut in September as sort of the baseline scenario right now? So I guess I would think about it this way. I'll give an example of cases in which it would be appropriate to cut and maybe that it wouldn't be appropriate to cut. So if we were to see, for example, inflation moving down quickly or more or less in line with expectations, growth remains, let's say, reasonably strong, and the labor market remains, consistent with its current condition, then I would think that a rate cut could be on the table at the September meeting. If inflation were to prove, stickier and we were to see higher readings from inflation, disappointing readings, we would weigh that along with the other things. I think it's going to be not just any one thing. It's going to be the inflation data. It's going to be the employment data. It's going to be the balance of risks as we see it. It's going to be the totality of all of that
help us make this decision. And just to follow up on that, specifically, in what ways right now, given all you've seen over the last few months in particular on shelter, on services, et cetera, in what ways are you not confident right now that inflation is on the way back to 2%? I think it's just a question of seeing more good data. We have seen the last couple of readings have certainly added to confidence, and we've seen progress across all three categories of core PCE inflation. That's goods, non-housing services, and housing services. So it's really just, we had a quarter of poor inflation data at the beginning of the year. Then we saw some more good inflation data. We had 7 months at the end of last year. We just want to see more and gain confidence. And as I said, we did gain confidence, and more good data would cause us to gain more confidence. Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. The March SEP pointed to 3 cuts in 2024 with core inflation at 2.6% and the unemployment rate at 4%. Since we're now at that level in terms of inflation and already beyond what was projected for the labor market, I'm just wondering if that rate path is back to being the best guidepost for policy rather than, let's say, the shallower one laid out in the June SEP. So I would just say, really the path ahead is going to depend on the way the economy evolves. And I can't really give you any better forward guidance on it than that. We didn't, of course, do an SEP at this meeting. We will do another one at the September meeting. I would just say I can imagine a scenario in which there would be everywhere from 0 cuts to several cuts, depending on the way the economy evolves. And I wouldn't want to lay out a baseline path for you there today. I've said what I can say about September and about today, though. Gold buy. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've said before that you wouldn't wait until inflation got to 2% to cut rates because of how inflation has lagged. Does that apply for the labor market too? अगले 3 मिनट में अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है ना 2430 पे, तो श्योरली 2450 को टच करेगी मार्केट. तो सर मजे हो रहे हैं, मजे अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बार बार आपको कॉल दे रहा हूँ स्क्रीन पे लिख के. ज़रा प्लीज़ इनको कंसीडर करें चीज़ों को और चीज़ों को फॉलो किया करें. आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होएगा और इंशाल्लाह हाँ ठीक है, वेरी गुड. स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने अपनी बाई की ट्रेड्स को, लेकिन जाने दूंगा अभी मैं. अगर 3 मिनट बाद ये कैंडल ऊपर ही क्लोज होती है तो फिर मैं स्टॉप लॉस भी हटा दूंगा और फिर जाने दूंगा इनको. आप भी देखें क्या करना है क्या नहीं. मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा. Labor market conditions quite closely, and that's what we're seeing. If we start to see something that looks to be more than that, then we're well positioned to respond. That's part of what we're thinking. And when you talk about seeing something that's more than whatever softness or slowdown you expect, in the past, you've said that stronger growth wouldn't override better news on inflation. I wonder how that cuts the other way. If you're seeing more softness in the labor market than what you would expect, does that change the calculus on what you're looking for out of the inflation numbers to recalibrate policy? So we have growth isn't one of our three. We have 2 mandates, as you know. The labor market, maximum employment is one, and stable prices is another. So we weigh those 2 things equally under the law. When we were far away from our inflation mandate, we had to focus on that. Now we're back to a closer to even focus. So we'll be looking at labor market conditions and asking whether we're getting what we're seeing. And as I said, we're prepared to respond if we see it that it's not what we wanted to see, which was a gradual normalization of conditions. If we see more than that, and it wouldn't be any one statistic, although of course the unemployment rate is generally thought to be a good single statistic, but we'd be looking at wages, we'd be looking at participation, we'd be looking at all the things, surveys, quits, hires, all of those things to determine the overall status of the labor market. But we're looking at it now. I would say again, I think you're back to conditions that are close to 2019 conditions, and that was not an inflationary economy. Broadly similar labor markets then. I think core inflation was actually running below 2%. So I don't now think of the labor market in its current state as a likely source of significant inflationary pressures. So I would not like to see material further
cooling in the labor market, and that's part of what's behind our thinking. The other part, of course, is that we have made real progress on inflation, and we've got growing confidence there that we are not quite there yet, but we're getting more confident that we're on a sustainable path down to 2%. So those two things are working together, and we're factoring those both into our policy. Chris. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned not wanting to see any further cooling in the job market. Why not, or would you consider preemptive cuts to prevent if you saw risks of an unexpected cooling? Is that something you would cut ahead of time for? So I wouldn't say I wouldn't want to see any other cooling. It would be more of a material difference. If we'd be looking at this and if we see something that looks like a more significant downturn, that would be something that we would have the शकील साहब पता तो था सबको गोल्ड आज बाय होना है, शायद मार्केट पोल की कंफर्मेशन का वेट कर रही थी. अब जैसे जैसे पोल बोलता जा रहा है वो गोल्ड मार्केट ऊपर भागती जा रही है और मुझे लगता है कि अब वो बाय की कंफर्मेशन भी हो गई है, बाय का वो आ गया है, वॉल्यूम भी आ गया. तो अगर किसी ने बाय नहीं किया तो भाई बाय का सोच लो. 2428 मुश्किल है लेकिन 2428 से बाय कर लो. 2427 2426 दीज आर द लेवल्स फॉर द बाइंग. बाकी आपकी अपनी अप्रोच सोच है. मुझे लगता है कि मार्केट ये अभी 2436 और 2440 को टच करेगी. तो अभी बाय ही लग रहा है मार्केट में. मुझे सेल की कोई भी आवाज़ नज़र नहीं आ रही. तो सर यहाँ पे 2430 के ऊपर बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको क्रॉस होने दें. अभी जस्ट इसने टेस्ट किया है इसको 2430 पे जी. 2430 के ऊपर बड़ा तगड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको क्रॉस होने दें और उसके बाद हाँ छोटा सा ऐसा लेके कोशिश कर सकते हैं बाय करने की, क्योंकि मार्केट अभी तक बाय ही है. तो मैं देख रहा हूँ 2432 को अगर क्रॉस करती है ना मार्केट तो फिर डेफिनेटली 50-40 ये वाले लेवल कोई लेवल नहीं है. मुझे लगता है कि मार्केट ने वो मौका दिया आपको बाय करने का, ले लेना चाहिए. बाकी ये है कि मुझे वो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र नहीं आता. खैर किसी को नज़र आता है तो उस हिसाब से प्रीवियस वीकली हाई है ना वहाँ पे जस्ट. ठीक है, वो अगर उसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर आप देख लीजिएगा. लेकिन वो पॉइंट ये है कि फिर आपका बाद में स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी देखना होता है आपने. तो M15 की तो मारूबुजो बुलिश कैंडल है नंबर 1 M15 की, और इसके अंदर वॉल्यूम भी बाय साइड पे अच्छा है और मार्केट में भी बाय साइड के ही इशारे हैं. अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो पिछले आधे घंटे से मुसलसल गिर रहा है. तो ये एक इंडिकेशन है मेरे ख्याल से गोल्ड को बाय करने की. और आप देखें अपनी मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक अगर मार्केट आपको अलाउ करती है तो यस यू कैन टेक द चांस टू बाय द गोल्ड फॉर अनदर फ्यू मिनट्स. बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं. To be normalized here. Thank you. Yeah, I can't really say that honestly. We've seen significant movement in the labor market, and we're very mindful of this question of is it just normalization or is it more? We think it's just more normalization, but we want to be in a position to support the labor market. At the same time, we're seeing progress on inflation. So, we actually got to this. We raised rates a year ago at the July meeting, and if you look at the situation in the economy a year ago, inflation was over 4%. It was a completely different economy. Now we've made a lot of progress, and the labor market, as I think, unemployment was in the mid threes. So it's a different economy, and I think it's coming to be time to adjust that so that we support this continued process. The thing we're trying to do is, that we have, we've had this really significant decline in inflation, and unemployment has remained low. And this is a really unusual and historically unusual and such a welcome outcome for the people we serve. What we're thinking about all the time is how do we keep this going? And this is part of that. We think we don't need to be 100% focused on inflation because of the progress we've made. 12-month headline at 2.5, core at 2.6. It's way down from where it was. The job is not done on inflation, but nonetheless, we can afford to begin to dial back the restriction in our policy rate. And I think we're just as part of a process. In terms of what that looks like,
I mean, I think most rate, you would think in a base case that policy rates would move down from here, but I don't want to try to give specific, forward guidance about when that might be, because the pace at which it might happen, because I think that's really going to depend on the economy, and that's highly uncertain. Rachel. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. On inflation, do the past few months of good reports look like what we saw last year, where you really had a lot of momentum with a few bumps in between? Would you characterize that kind of momentum as back on track at this point in the year? Actually, what we're seeing now is a little better than what we saw last year. Last year, as we pointed out late in the year, a whole lot of the progress we saw last year was from goods prices, which were going down at an unsustainable rate, disinflating at an unsustainable rate. This is a broader disinflation. This has goods prices coming down, but we're also now seeing progress in the other two big categories, non-housing services and housing services. So, so the thing is, you got 1 quarter of that. We had 7 months of low inflation. You got 1 quarter of this. I would say the quality of this is higher, and it's good, but so far it's only a quarter. So I think we need to see more to know that we're, to have more confidence that we're on a good path down to 2%. But as I mentioned, our confidence is growing because we've been getting good data. Okay. And things like the ECI report and, frankly, the softening in the labor market conditions, give you more confidence that the economy's not overheating. It doesn't look like an overheating economy. And it looks like an economy that's normalizing. Okay. And if we were to think about the first couple of months of the year, is there any sense now that they were these blips that could have actually allowed for earlier rate cuts, as were some of the projections going into 2024? So the thing about, if what it is seasonality, and it could just be, it's very, very hard to do appropriate seasonal adjustments. If that's what it is, then that actually implies that other months we're reporting too low inflation. If you smoothed it out, it's a zero-sum game. And that's why we look at 12 months. We look at 12 months because that takes all that out, all those effects out. 12-month now is 2.5% headline, 2.6% core. This is so much better than where we were even a year ago. It's a lot better. Now, the job is not done. I want to stress that, and we're committed to getting inflation sustainably under 2%, but we need to take note of that progress, and we need to weigh the risks to the labor market and the risks to our inflation target now more equally than we did a year ago. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. I'd like to ask you about the balance of risks as the American people see it. At this point, is the risk greater to leave interest rates where they are, given the damage that higher interest rates do to the economy in slowing demand and raising prices, or is it more important for the American people that you keep rates where they are to bring inflation down? I think that we've been given an assignment by Congress. This is how we serve the American people, is by achieving maximum employment and price stability, right? And so in our, quasi-constitutional document, the Statement on Longer Run Goals and Monetary Policy Strategy, we look at the two goals, and if one of them is farther away than the other, the two variables, inflation and employment, if one is farther away from its goal than the other, then you concentrate on the one that's farther away, and you take account of the time to reach the goal. So for the last couple of years, the best service we could do to the American people was to focus on inflation. But as inflation has come down, and I think the upside risks to inflation have decreased. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब्बास भाई क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब्बास भाई वेलकम बैक। क्या कहती है जनाब आपकी, वो देख लिया होगा आपने? स्टेटमेंट तो पूरी कॉशियसनेस बताती है, क्योंकि देखें स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्शन डिफरेंट था। ठीक है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने इस चीज़ को एंडोर्स किया है कि हाँ रेट कट जो है सितंबर की मीटिंग में ऑन द टेबल है। प्लस थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, मतलब होता है ना कि आपने एक मैदान फतह कर लियो, कि आपकी एक जंग थी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, आपने उसको फतह कर लिया है, एंड नाउ यू आर लोअरिंग रेट्स। वो कंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन देखिए सितंबर में अभी पूरे 2 महीने हैं, सितंबर के एंड पे मीटिंग है आई थिंक सो, तो उसमें अभी काफ़ी टाइम मौजूद है। उससे दौरान क्या चीज़ें हो सकती हैं वो डिफरेंट है। फॉर द टाइम बीइंग के लिए जो भी चीज़ें हैं इस तरह के इवेंट्स में ना क्विकली जंप इन करना हमेशा गैर मुनासिब होता है। आपने ना एरियाज और लेवल मार्क करने होते हैं, क्योंकि यहाँ से बाय भी बहुत ट्रिकी है और यहाँ से अभी सेल तो हर किधर एडवाइजेबल नहीं है।
इन हालात में कि जब फेडरल रिजर्व एक चीज़ प्लान कर नहीं, चुकी वो है अब्बास कि भाई हाँ, हमने करवा दिया हुआ है, हमने वो 2424 से 2423 से 26 से 2427 से 28 से भी इवन बाय किया हुआ है हमारी सारी हाँ बस फिर ऑडियंस ने। ठीक है, जिन्होंने बाय किया हुआ हाँ है प्रॉफिट भी लें, सब कुछ लें, मार्केट है, हाँ, मार्केट में सर्टन तरह के ना इम्बैलेंस TP1 क्रिएट भी होते मेरे रहते ख्याल हैं। से कई लोगों ने हिट कर लिया हुआ है। बताओ यार सब लोग चैट में, आप बताते क्यों नहीं है कि रहील भाई ने आज कोई प्रॉफिट करवाया आपको? शकील ने कर लिया TP1 हिट अपना। जरा चैट में बताएं सब लोग। शकील तो करता ही रहता है ना, शकील तो 10 मिनट की मूव में ना 4 दफा टीपी ले चुका होता है, तो वो तो ठीक है। तो बहरहाल स्टेटमेंट इस तरह की होती है जैसे ये नॉर्मली करते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो वो क्या कहता है कि जी अभी भी लो रेट्स के लिए ना हमें ग्रेटर कॉन्फिडेंस चाहिए। पहले सफिशिएंट कॉन्फिडेंस था, आज उसने ग्रेटर कॉन्फिडेंस कह दिया है। बट इधर जो है ना, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है तो इसमें उसने बता दिया है कि हाँ यार चीज़ें जो है ना वो बेटर हो चुकी हैं, तो अब हम जो है वो वाकई मार्च में करने जा रहे हैं। इसी वजह से हमने अगर डॉलर इंडेक्स में भी देखा हो ना तो स्पाइक्स थोड़ा अप साइड पे लगा था, वो फिर नीचे की जानिब आया है। वहाँ पे 4 की कैंडल जो है वो एक नीचे की जानिब क्लोज होने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में हर इनकमिंग डाटा जो है वो, क्योंकि इनकमिंग डाटा के ऊपर ही सारा बायस क्रिएट होता है, तो इनकमिंग डाटा अगर एक्सेप्शनली डॉलर की फेवर में आना शुरू हो जाता है, स्पेशली इन्फ्लेशन वगैरह को लेके, तो फिर मामलात जो है ना वो हाथ से निकल भी सकते हैं। और अगर नहीं होता तो दैट इज गुड टू गो गोल्ड अगेन, क्योंकि ये गोल्ड के साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो रात में वाकया ईरान के अंदर हुआ है उस का एक रिप्लाई भी मार्केट में मौजूद है, तो उस वजह से गोल्ड कोई बड़ी, हम कहना कोई सेल मूव या कोई बड़ी डीपर करेक्शन में जाए वो नहीं जाएगा। छोटे छोटे लेवल्स हैं जहां पर वो दोबारा से डिमांड लेगा एंड इट विल गो। सो बेटर है अपनी ट्रेड को समझें कैसे कर सकते हैं, लेवल्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि देखें आज 2403 समथिंग के करीब जो एक है ना एक तगड़ा एरिया है, ठीक है। इसी तरह इससे ऊपर आते हैं तो 2414 का एरिया है, वो बहुत अच्छा है, तो अपॉर्चुनिटी देता है, लें। ज़्यादा स्टिक होने की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉफिट लें, साइड पे हो जाएं, बजाय इसके कि आप स्टिक रहें। सर सिंपल दूसरी हाल है ना, TP1 TP2 हिट करवा के बंदा ब्रेक इवन के ऊपर एसएल छोड़े और छोड़ दे ट्रेड को। जो वो तो हर एक की अपनी इंडिविजुअल की चॉइस है ना। देखें अब यहाँ सुनने वाले काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, और हर बंदे का अपना डिज़ाइन है, हर बंदे की ना अपनी कहानी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से चलें, अपने ट्रेड लें, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यस, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास भाई ने भी आते ही बोला था कि गोल्ड आज बाय है, सेल वाला कोई सीन नहीं है दूर दूर तक। और मैं तो गोल्ड का पिछले 3 दिन से मुसलसल कह रहा हूँ यस, तो बाय आज कर लें, भी बाय कर आपने लें। बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर बाय किया भी था। और रील भाई ने भी आते ही जब हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वहां पे मार्केट नहीं गई, लेकिन रील भाई ने कहा अब जिस तरह से एक सपोर्ट लेवल इसे बना लिया ना 2422 के ऊपर, अब ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, नीचे 21 को नहीं टच करेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर बाय जाना स्टार्ट हो गया। और ये जो अब भी अभी भी करेक्टिव मूव हमें सेल में नजर आ रही है, ये हमें दोबारा बाय करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे लेवल देगी। अगर करेक्टिव मूव आती है तो डेफिनेटली हम दोबारा बाय करेंगे किसी अच्छे लो से। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ऊपर देखें, फर्स्ट टाइम जब 24 में गोल्ड की प्राइस आई थी तो 2440 का एरिया टच हुआ था, तो 2440 2445 गुड एरिया है। ये एरिया ब्रीच होता है तो फिर आगे 2465 2470 और फिर ऑल टाइम हाई 2480। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आज की रात में सारे एरियाज हो जाने हैं, ऑब्वियसली मार्केट है। दो दो घंटे के बाद तो वैसे भी जो है गोल्ड की जो ट्रेडिंग है वैसे ही बंद हो जाती है, तो कल देखा जाएगा। फिर कल के दिन में जो आने वाली आगे रिलीजेज हैं, और फिर आगे फ्राइडे को स्पेशली एनएफपी है, वो भी देखना है, क्योंकि अगर एनएफपी बहुत अच्छा आ जाता है तो वो फिर एक करेक्टिव जो गोल्ड के अंदर लेग है ना वो बनेगी। दैट वुड बी अगेन अ गुड चांस कि आप वहां से फिर बाय करें। और अदनान यार, होल्ड वाला तो मैं कभी भी ऑप्शन नहीं दूंगा, ये है मार्केट भैया, ठीक है ना। आपने अगर 22 से बाय किया है, अभी $12-13 है, तो गोल्ड में $12-13 यार छोटी मूव नहीं होती। बुक करें, साइड पे हो, मूव कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कई दफ़ा यहाँ पे बताया है, नहीं तो वीडियोस भी पड़ी हैं वो देखें, साथ साथ चलाएं। मैं ना लाइव अपने अकाउंट पे ट्रेलिंग कर रहा होता हूँ ना, तो लोगों को नज़र आता है कि ये ट्रेल हाँ स्टॉप तो लॉस लगा रहा है। ट्रेल स्टॉप लॉस कर लें, बिल्कुल हाँ जी, ठीक तो है। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ साथ लगा रहा होता हूँ,
और ये मेरी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब भी मैं सेट करता हूँ ना, क्योंकि मेरा वो MT4 तो दूसरी स्क्रीन पे होता है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मेरे पास ना, लोगों के पास। तो ये मैं ना छोड़ देता हूँ। ये देखें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी आ गया, ऑर्डर नंबर लिखा आ रहा है। तो वो दिखाने का मकसद ये होता है आपको कि भाई ये है ट्रेलिंग लॉस का। अब मैंने 10,000 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जितना मर्जी बड़ा दे दो, वो तो आपकी मर्जी है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करो। मेरी कई ट्रेडें प्रॉफिट में हिट कर गई, मैंने दोबारा भी ट्रेड ले ली और बड़ा अच्छा ट्रेड हो रही है। और ये इस तरह की ट्रेड्स बाद में बड़े सालों बाद आती हैं कि मतलब बताओ। बट रहील भाई, मैं आपको मशवरा दूंगा अपना 50% जो है ना यहाँ पे क्लोज कर दें और ट्रेलिंग लगा बाकी दिया ना, बस ठीक है। देखें हमारी ऑडियंस भी तो बड़ी automatically समझदार हो है, जाएगा, हमारी वो ऑडियंस भी automatically हो बड़ी जाएगा। समझदार है। 1800 वोट आए हैं, 1900 वोट आए हैं टोटल, और 55% लोगों ने कहा गोल्ड बाय होगा। देखें, चेक करें, वोटिंग आपके सामने ही है। 34% लोगों ने कहा सेल होगा, और केवल 13% लोगों ने कहा उनको आइडिया नहीं है। उनको नहीं आइडिया होगा, अच्छी बात है, मान लेनी चाहिए आइडिया नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है जी। अभी गोल्ड की कैंडल क्लोजिंग के ऊपर मैं तबसरा करना चाहूँगा। गोल्ड की कैंडल बुलिश क्लोज हुई है, वॉल्यूम पहले से ज़्यादा है, गोल्ड अभी भी बाय साइड पे मुझे लग रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2440 मुझे लग रहा है कि 2440 शायद मार्केट अब हिट करने जाएगी, जो कि मेरा TP भी वहाँ पे दिया हुआ है कि 2440 ही लगेगा यहाँ पे। तो मेरा मार्केट रेजिस्टेंस एरिया में दाखिल हो चुकी है, और 2440 वाले एरिया को मैं अब टारगेट करूँगा, और वो मेरा फाइनल TP होगा फॉर टुनाइट, आज रात के लिए। मैं भी 2445 तक का वेट करूँ, वो देखूंगा कि मार्केट में कितनी ज़्यादा जान है, फिर मैं 2445 का भी वेट कर लूँगा, लेकिन उसके बाद मैं एग्जिट ले लूँगा, और फिर मैं मस्त होकर पूरा वीक एंजॉय करूँगा नथिया गली में और मरी के बगात में। आप लोग देखते रहना मार्केट। जी बास भाई, पापा जी ने जो कहा यहाँ सुनने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा सुन लें पापा जी को। देख लें अगर एंड पे कोई ऐसी बात है। मैं कहता हूँ 2 वैसे मिनट तो सुन लेते हैं, हाँ फिर सुन उसके लेते बाद हैं। तबसरा लेते हैं। I think, you know, history doesn't repeat itself. It rhymes. I think that statement is very true about the economy. You never assume it's going to be just the same. An example would be, is there a trend increase in the level of vacancies? There are many, many examples, so it's never exactly the same. Also, let's remember that this pandemic era has been one in which so many, you know, apparent rules have been flouted, like the inverted yield curve, for starters. So many pieces of received wisdom just haven't worked, and it's because the situation really is unusual or unique in that so much of this inflation came from the shutdown in the economy and the resulting supply problems in the face of admittedly very strong demand. So the whole situation is not the same as many of the other prior inflation or downturns that we've seen, or business cycles that we've seen. So we're having to learn, you know, we're having to, you know, to be very careful about the judgments that we make, I would say. So we don't assume that these regularities will just repeat themselves automatically. Thank you, Chair Powell. I'm Mara Mokwe with Bloomberg. There seems to be quite a difference between what the anecdotal data are telling us, such as the very recent downbeat beige book, and the hard data. Do you